નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, so now today continue our chapter in the chapter number 14 for the exercise 14.2, the first questions. So in the first questions is, which of the following figure have rotational symmetry of order more than 1? So here is the given some figures. We have to find the rotational symmetry but more than 1. कितनी ऐसी फिगर है जिसकी रोटेशनल जो सिमेट्री है वो मोर देन 1 से यानी से 1 से ज्यादा है. देन हाउ टू चेक? ओके, so first of all rotation symmetry means we have to rotate. So in rotate the full rotates here to start, then after rotate and end to here. It means total 360 degree. Okay, total how many? Total 360 degree. So we have to rotate the first following figure. So first of all assume the one point is here, is suppose P. Now rotate. So we have to draw here. Suppose this one is our first original figure, right? And here is P. Then after a rotation, so rotate in this way. So next figure. So our P's position is here, right? Again rotations. So now our P's position is here. यहाँ से रोटेट किया तो इस साइड हो गया, यहाँ से रोटेट किया तो इस साइड हो गया. Again we have to rotate. So now our P's position is here and the last up to here. So we have to rotate total 360 degree. Then how many times? So 1, 2, 3 and 4. How many order? 4 order. और सभी में देखो तो जो अपनी फिगर है वो ओरिजिनल शेप की जैसे दिख रही है. देखो सभी में बीच में जो प्लस शेप में समय शेप दिख रहा है. कहीं पे भी अपनी फिगर्स की जो शेप है वो डिफरेंट नहीं हुई है. यदि शेप डिफरेंट हो जाए तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है. तो यहाँ पे देखो कि सभी में अपनी फिगर जो है वो एक जैसी है, सेम ही फिगर है, राइट. और 4 ऑर्डर हो जाने के बाद हम लोग अपनी ओरिजिनल फिगर जो है उसमें आ जाते हैं. देन हाउ मेनी रोटेशंस? तो अपना आंसर हो जाएगा 4, यानी कि मोर देन 1 रोटेशंस. द फर्स्ट फिगर इज मोर देन 1 रोटेशंस. सो अंडरस्टैंड फर्स्ट वन. सेकंड वन, सो इन द सेकंड फिगर्स वी हैव टू गिवन अ ट्रायंगल. The same, first of all, our main figure in this format. Here is given a 1 point and same for the point P. Right? Now rotate to 1 by 1. So first of all, we have to rotate. Triangle is here. P. इस तरह से आप इसे रोटेट करेंगे तो ये जिस तरह से रोटेट करेंगे तो नेक्स्ट की पोजीशन इस तरह से रोट होगा. रोटेशंस. देन आफ्टर अगेन इसे हम लोग रोटेशन करेंगे. सो नेक्स्ट पी की पोजीशंस कहां पे होगी? यहां पे. और अगेन हम लोग इसे रोटेट करेंगे तो हमारी जो ओरिजिनल जो फिगर थी वो हमें मिल जाएगी. ये मैंने यहाँ पे पी इसलिए लिया था ताकि आपको पता चले कि जब भी आप रोटेट कर रहे हो तो आपकी जो ये पी की पोजीशन है वो किस तरह से होगी. आपको फर्स्ट इसे रोटेट करो तो नेक्स्ट टाइम पी की पोजीशन ये हो जाएगी. इस तरह से रोटेट करोगे ना आप लोग, और उसके बाद जब रोट करोगे तो इस तरह से होगी. जो लास्ट में अगेन रोटेशन करोगे तो आपको ये पोजीशंस मिल जाएगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट, सी ट्रायंगल इज सेम फॉर ऑल द रोटेशंस. यस, सेम ट्रायंगल्स, डिफरेंट ट्रायंगल्स वी हैव नॉट सी. Original figure is same triangle is all the rotations. Then first of all, how many rotations in this one? How many? So here is given 1, 2, 3. How many? 1, 2 and 3. Okay? So here is the given 3 rotations symmetry. How many? 3. It means more than 1 rotation symmetry. Clear? First 2. Now the next questions, third one. So in the third questions we have to given in this type of the figures.
So we have to rotate one by one and check. So first of all, our original figure in this types. Now we have to rotate. इसे हम लोग rotate करेंगे. So next in this format, right? Again we have to rotate. So now next steps we have to see in this format. Again we have to rotate. So next steps we have to see in this format, and the last we have to rotate. Then we have to find the original figure. So see dear students, here is our original figure, but we have to rotate it sometimes or many times, but original figure we have to not find it. ये ओरिजिनल फिगर जिस तरह से नहीं है, देखो इस तरह से फेस है, हमारे यहाँ पे फेस इस तरह से. So we have to find original figure is only for the one times, and one time this means the total 360 degree. First of all we have to rotate it as the 90, 180, 270 and total 360. It means only for the one times. कोई भी फिगर हो उसमें one rotations तो होगा है. Only for one rotation. So here is the given is only for the one rotations. जीरो रोटेशंस किसी पे भी हो गया होगा, क्योंकि आप किसी भी फिगर्स को रोटेट करोगे तो 360 डिग्री पे वो ओरिजिनल फिगर ही आएगी. तो ऑर्डर 1 तो हो ही जाएगा. ओके, देन आफ्टर द नेक्स्ट फिगर, the next figure is given in D, and the these types of the figure. So let's start. Then how many rotations? So first of all we have to start in this way. Now we have to rotate. So this one is our original figure in this format, right? Now again we have to rotate. So in this format again we have to rotate this one, and the last one we have to find out. So here two times this one and this one is find out the original figure. यहाँ पे हमें अपनी ओरिजिनल जिस तरह से फिगर है वो फाइंड आउट हो रहा है. यहाँ पे तो ओपन है. Then how many rotations? So in this figures the total 2 times rotations. Then we have to find our original figure. In this one, first of all 360, and the second one is 180. So 180 rotations पे हमें ओरिजिनल जिस तरह की शेप्स की फिगर है वो मिलेगी, और 360 पे तो हमारी ओरिजिनल फिगर तो मिलती है. Then how many orders? Order is means only for the 2 orders. How many orders? 2 orders. So understand dear students in these types of the questions. Clear? So we have to find the more than one order. So in more than one orders, so this one is more than one orders. This one is also for the more than one address. This one is not more than one order, and then this one is also for the more than one order. यानी कि A, B or D. This one is the more than one order. Understand? A to D. Okay. Now the remaining for the question number 1, right? E and F. You have to find it yourself. Same. How many rotations? Okay. Now the next questions. Then the question number 2. Same questions, but we have to find first of all some questions, and remaining questions also we have to find it yourself. Try it. Very simple. Okay, students. Now the first one for the question number 2. In the first questions we have to given one figure, and this types of the figure is given. How many order we have to rotate? So let's check one by one. We have to rotate. Okay. So first of all, this one is our original figure, right? Now in original figures too we have to rotate. इसे हम लोग इस तरह से rotate करेंगे. So in this types is here and this one is here. इस types का हमें कुछ shape मिलेगा. Now one more times we have to rotate. Then this one is in this sides and this one is in upsides, यानी कि this types. Again we have to rotate. Then this portion is upside and this portion is downside, and again we have to rotate the original figures we have to find. We have to rotate this one by then different shape. आपको इस तरह से कुछ ना कुछ shape मिलेंगे.
Now this one is our original figures. This one is our original figure. So in this steps is here. So only for the 2 times we have to find our original figures. Only for 2 times, here and here. This times is the original figure is not same. कुछ figures change हो गए. Only for how many times? Only for the 2 times. This means order of rotation is equal to 2. So we have to write order of rotations is equal to how many? 2. Order of rotational symmetry is equal to 2. So the first question answer is equal to 2. Okay? Now the next question is given a cross. So let's check. First of all, dear students, this one and this one. These two is a different cross. One is horizontally and one is vertically. ये दोनों का शेप है वो डिफरेंट है. देखो यदि आप लोगों को दिखाई दे रहा हो तो मैं इस शेप को इस तरह से ड्रॉ करता हूँ और इस शेप को मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ. So this two shape is the different, not the same shape. Okay, this one is horizontal and one is the vertically. These two shapes is the different shape, not the same shape. हमें दिखाई same देता है लेकिन इस original यानी कि same होता नहीं. Okay, so now the last one. So we have to rotate. So first of all, in this format, I think. इस तरह से हो जाएगा. इसे आप लोग रोटेशन करेंगे तो ये अप वाला इस तरह से हो जाएगा और ये इस तरह से हो जाएगा. Then after we have to rotate, then our original two figures we have to find. And again we have to rotate same figures and the last one is this one. This means here and here our original figure यानी कि our original figures we have to find. These two position यानी कि 360 and 180. 360 पर पे सभी फिगर जो है वो अपने ओरिजिनल शेप में तो आएगी. यानी कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 1 तो सभी में ही होगा. ना किसी भी फिगर में 2 होता है यहाँ पे मोर देन 1 मोर देन 3 तो वही हमें फाइंड करना है. ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री सभी में 1 तो होगा लेकिन इन दिस फिगर्स में ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री symmetry is equal to 2. Why? Because here is the 2 step or 2 positions the figure view to same. Same for our first one. Now A, B or C is given a triangles. Triangles में किस तरह से रोटेशन करते हैं वो आप सबको पता है. फर्स्ट क्वेश्चन में भी आ गया इसलिए मैंने नेक्स्ट D वाला ऑप्शन जो है वो लिया है. So let's start our D. So first of all our original position is this format. Let's take first of all here is given assume the one point P. We have to rotate. If you are the first times we have to rotate, right? Then after P's position is here. Assume अपने माइंड में इसे रोटेट करो. चलो इस पोर्शन को आप इस तरह से रोटेट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा. इस पोर्शन को आप इस तरह से रोटेट करोगे तो इस तरह से हो जाएगा. राइट. नेक्स्ट अगेन वी हैव टू रोटेट. दिस पॉइंट्स इज नेक्स्ट टाइम इन दिस पोजीशंस. चेक इट. अपने दिमाग को शांत रखो और इसे रोटेट करो. आपको ये पोजीशंस दिखाई देंगे. Okay, again one more times we have to rotate. Then after this points P we have to assume here. यहाँ पे आ जाएगा. And again we have to rotate in our original figure we have to find. तो first of all dear students see all the figures. कहीं पे भी आपको कुछ डिफरेंट फिगर वो ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है. यहाँ से यहाँ या इसमें भी वही है सेम फिगर. यहाँ पे भी ये दोनों सेम है. यहाँ पे भी ये दोनों सेम है. तो अपना ओरिजिनल जो शेप है वो सभी में सेम ही है रोटेट हो जाने के बाद. Then how many times we have to order of rotational symmetry? So 1, 2, 3 and 360 total 4. So in this question order of
rotational symmetry is equal to how many times? 4 times. So understand students how to find the order of rotational symmetry for the following figures in these steps. One by one rotate karo or we have to find. So remaining E, F, G or H you have to solve it yourself. Thank you for joining us.